ఢిల్లీలో జరుగుతున్న గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Minister of India Shri Narendra Modi, who will lead the nation in paying homage to the Amar Jawan, the immortal soldier. इंडिया गेट पर सेना के तीनों अंगों के जोशीले जवानों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कार्तिक दास. इंडिया गेट पर सेना की टुकड़ी का नेतृत्व संभाला है कैप्टन महेश सिंह बिष्ट ने. नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जय कुमार और वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रियव्रत सिंह. The three service flags at the north end of India Gate. A light early morning breeze here. In the black of the night, in the cold of winter, in the blaze of the sun, in the storm of thunder, fear not, for I am here, on watch, on duty, on guard. Fear not, for I am here. I am a soldier. A reversed rifle, standing on its barrel and crested by a soldier's helmet, symbolizing the immortal soldier, giving heart to stone, etched with golden letters, Amar Jawan, he who lives forever. Fire, sacred and pure, the flames offering a prayer, silently, radiant and strong. तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एडमिरल आर के धवन और नौसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल और उपराहा 67वें गणतंत्र दिवस का गौरवशाली अवसर. राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर. When Prime Minister Narendra Modi will arrive here, he will also lay a wreath here at the memorial. The wreath, symbolic in more ways than one, other than being the traditional form of floral tribute at funerals, the circular shape of the wreath is symbolic of eternity or eternal life, because a circle has no beginning or end. रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आगमन, इनका स्वागत सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों द्वारा. सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल और उपराहा और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर के धवन. This is again a view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the President's bodyguards awaiting the arrival of their Supreme Commander, the President of India, Shri Pranab Mukherjee, as he will soon descend the 32-odd steps. राजपथ के दोनों ओर अपार जनसमूह राष्ट्र गौरव के इस पर्व का उल्लास और उमंग के साथ अवलोकन करने के लिए उपस्थित. It's a crisp January morning here in New Delhi, and though the day dawned bearing a thin veil of mist, a persevering sun seems to be winning, and a lovely golden glow slowly bathing the entire area. रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का आगमन. इंडिया गेट पर कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा. कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे. So here at India Gate, the Defence Minister Shri Manohar Parrikar has arrived. We already have the three chiefs, the Army Chief General Dalbir Singh, the Naval Chief Admiral R.K. Dhawan,
and the Air Force Chief, Air Chief Marshal Orup Raha here, and of course the Minister of State for Defence Rao Inderjeet Singh, all awaiting to receive Prime Minister Shri Narendra Modi, who is expected to arrive here shortly. And as the Prime Minister's carcade will be making its way to India Gate, it is indeed a point in time for the Chief of Government of the largest democracy in the world, as he heads towards the Amar Jawan Jyoti, to lead the nation in paying homage to those brave men who laid down their lives so that our India may prosper and become home to generations of enlightened world citizens. And as we here in the capital, New Delhi, pay homage to the Amar Jawan, our men in uniform right now keep a watch over snowy mountains and sandy dunes, our skies and extensive coastline. They stand tall and strong, and we are proud of them. 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट की मेहराब के बीच एक छोटे चबूतरे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी और आज सेना के तीनों अंगों के जोशीले जवान यहां पर उपस्थित सेना की संयुक्त टुकड़ी, नौसेना, थल सेना और वायुसेना का संयोजन देश का 67वां गणतंत्र दिवस Alighting from the steps of Rashtrapati Bhavan into the forecourt, we have our chief guest for this year's parade, the President of France, François Hollande. He will accompany the President of India, Shri Pranab Mukherjee, and together they will leave, escorted by the President's bodyguards for the saluting base at Rajpath. इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद और माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। President François Hollande and President Pranab Mukherjee now leaving for the saluting base, escorted by the President's bodyguards, 46 bodyguards, on magnificent bay and dark-colored mounts. And this is Rajpath from our specially positioned cameras, as the Prime Minister's carcade makes its way to India Gate, where on behalf of a grateful nation, Prime Minister Narendra Modi will pay homage to the immortal soldier. साथ ही रक्षा राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल बलबीर सिंह, नौसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और रक्षा सचिव श्री जी मोहन कुमार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले इसी पावन स्थल The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, greeted warmly by Defence Minister Manohar Parrikar.
The Prime Minister will now lay a wreath at the memorial. The buglers will sound the last post, which will be followed by 2 minutes of silence. Silence, which is the purest form of connecting. As every Indian today would seem to say, my words fall short, for no language can reveal the deepest reverence and gratitude I feel. So I close my eyes and bow my head to let silence say what's there to be said. My warrior, my soldier, my leader so bold, hear us as we reach out through the quietude of our soul. अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसका प्रतीक है ये अमर जवान योगी स्थल, अखंड ज्योति जहां सदैव प्रज्वलित रहती है। पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंतर्जनगढ़ सेलिब्रेट जस्ट अंतर्जनगढ़ चुप जस्ट
शहीदों को नमन करने श्रद्धांजलि कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए आज हम सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारे वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं। देश की आन रखेंगे हम। The buglers sounding the rouse and the guard commander ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the 2-minute silence. And Prime Minister Narendra Modi signing the ceremonial book at the Amar Jawan Jyoti, penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts forever. कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे में स्मरण हो आती है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की शब्द और उनकी पंक्तियां, कदम मिलाकर चलना होगा। A poignant time for the Prime Minister. घिरे प्रलय की घोर घटाई, पांव के नीचे अंगारे, Who expresses heartfelt emotions and feelings on behalf of over 1.2 billion Indians across the length and breadth of our beautiful and diverse country. चुनौतियों से जूझते हुए आगे के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए रास्ते की तलाश, राह की खोज सदैव करते रहने का संकल्प और उसे साकार करने का प्रण हमारे मन में सदैव होना चाहिए। चुनौतियों से पार होते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना इस जीवन की सार्थकता होगी और उस लक्ष्य को हासिल करने में सिर्फ And the purity of the fire here at India Gate समाज के लिए is purifying and transforming in more ways than one, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार as emotions, feelings and thoughts rise from the depth of substance की प्रेरणा देता है और इसीलिए with reverence पूरे विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान for the sacrifice और आज of our heroes. जिस तरह देश निरंतर अग्रसर है, उसी छवि को प्राप्त करने की और उसी स्थान को प्राप्त करने की ओर देश अग्रसर है। ये हम सब के लिए And as the Prime Minister leaves India Gate after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the emotions of a nation that acknowledges its gratitude to those who laid the foundations of a deep and pride-inspiring past for a present that holds the strong potential for an equitable and bright future for the nation. अमर जवानों के प्रति अपने उद्गारों को दर्ज किया और अमर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान देश की रक्षा में जागते हैं। और अब प्रधानमंत्री इंडिया गेट से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री पहले अमर जवान ज्योति स्थल पर आते हैं और यहाँ पधार कर अमर जवान ज्योति स्थल पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए शहीद हुए बलिदानी के प्रति इस समय The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, now leaving India Gate for Rajpath. इंडिया गेट के परिक्रमा पथ पर वाहनों का ये काफिला आगे की ओर बढ़ चला है, मंथर गति से आहिस्ता आहिस्ता। And even now, our minds reverberating with images of that poignant ceremonial for the Amar Jawan. The Prime Minister returning after paying homage to the immortal soldier. Moments where time stood still in reverence and remembrance to our fallen heroes. The entire entourage of cars and vehicles will now move steadily towards Rajpath. यहाँ उपस्थित जनसमुदाय आज साक्षी बनकर इस पूरे दृश्य का अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला इंडिया गेट से राजपथ की ओर बढ़ता हुआ एडमिरल आर.के. धवन, जनवरी की सर्द सुबह लेकिन
कोहरा अपेक्षाकृत कम है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे राजपथ और उससे भी आगे मौसम खिलता हुआ और हल्की हल्की नर्म धूप राजपथ पर बिखरती हुई। इसके लिए 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट की तरफ से सीओ कर्नल सुशील चांदवानी और ओसीपी लेफ्टिनेंट कर्नल The sacred flame burning brightly, eternally, in memory of the Amar Jawan. देश के कोने-कोने और विदेशों तक पहुंच रहा है। यहां से रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री के प्रस्थान के बाद अब अमर जवानों के सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक अमर जवान ज्योति राजपथ पर आगे की ओर जो इंडिया गेट पर हमेशा जलती रहती है। Captured by one of our cameras on top of India Gate, these are splendid visuals now of the Prime Minister's motorcade driving towards that point on Rajpath where he'll alight in front of the special enclosures. The green vistas, lush and gorgeous on both sides of Rajpath. The magnificence of one of the most beautiful parts of New Delhi. The cavalcade gliding along Rajpath slowly and steadily. People on either side waiting in anticipation. The Prime Minister's motorcade now moving close to a point where he'll alight. People on either side trying to spot Prime Minister Narendra Modi and get a glimpse of him. And of course many waving as the motorcade passes by. Spectators in the audience trying to get a closer look. आज राजपथ खुलकर खेलकर हंसकर जैसे कुछ बोलना There in the distance, of course, is Raisina Hill Rashtrapati Bhavan, but it's a misty morning. Warm and heavy feeling. Motorcade of the Prime Minister has And Prime Minister Mr. Narendra Modi about to alight from his car any moment now. proud moment for every Indian. The 67th Republic Day Parade of India. Ladies and gentlemen, the Prime Minister... Receiving him, Defence Minister Manohar Parrikar. And there's a cheer in the crowd as the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, arrives here at Rajpath. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजपथ पर आगमन और दर्शकों में जबरदस्त जोश और उत्साह। तीनों सेना प्रमुखों, अपने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हुए और राजपथ के दोनों ओर लगभग 1.25 लाख दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग दीर्घाएं हैं। जोश और उत्साह जनसमूह में। The Prime Minister's arrival here causing a lot of eagerness and excitement. Happy and welcoming faces greeting him as he meets with people across the spectrum. In these enclosures, we also have political personalities, defense and government officials, and a cross-section of people. The Vice President, Mr. Mohammad Hamid Ansari, now being greeted by Prime Minister Mr. Narendra Modi.
Mrs. Salma Ansari, also here today. India, an ancient civilization, young in its people, a country full of vitality, constantly growing and renewing itself. And even in the toughest of times, our resilience and belief in the future help us keep our eyes on the broad horizon ahead. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, its driving force. Vice President Shri Mohammad Hamid Ansari ascending the steps here. And as you can see, great excitement in the crowd. And this is a view of the arrival of the President's bodyguards escorting the President of India, Shri Pranab Mukherjee, along with our chief guest for this year's parade, the French President, François Hollande. Both presidents now arriving in state, escorted by the incomparable President's bodyguard. Ladies and gentlemen, President Shri Pranab Mukherjee, President of India, accompanied by His Excellency Mr. and François Hollande, His President Excellency of the French Republic, François Hollande, the President of the French Republic, being greeted very warmly by Prime Minister Narendra Modi, arriving at Rajpath for our 67th Republic Day parade. followed by the Minister of State for Defence, Rajiv Singh, Being presented to the Defence Minister, Mr. Manohar Parrikar, the three service chiefs, General Dalbir Singh, Admiral R.K. Dhawan and Air Chief Marshal Arup Raha. And of course we have a very large French delegation here today also to view the parade. and joined the prestigious Order of Officers of France. In 1979, he joined the Socialist Party and rose as a senior leader over the years in his political life. President Hollande is counted amongst the leading statesmen of the world. The Presidents, escorted by two ADCs, Major Rajesh Kumar from the Regiment of Artillery and Lieutenant Commander Rakesh Yadav of the Indian Navy, to the enclosure from where they'll view the parade. India welcomes His Excellency François Hollande and celebrates the values shared by our two vibrant democracies: liberty, freedom, equality, and justice. And the flag will be unfurled by Surgeon Lieutenant Ambika Nautiyal. Colonel Bomandadhira Chengappa, the commandant of the President's bodyguards, which will be accompanied by the on his unfurling Mount of the national Virat. flag and the 21-gun salute. All ladies and gentlemen are Any requested to moment grant now, the the national commandant anthem. of the President's bodyguard, Colonel Bomandadhira Chengappa, will give his word of command. The national anthem will be played, the national flag unfurled, and 21 guns will boom in salute. Ceremony of the Ashok Chakra. The nation will now confer award to its soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय अति असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी,
द पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल, 6वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। दो 3 सितंबर 2015 को लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल में घात लगाने वाले दस्ते में शामिल थे। शाम को 4 आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। लांस नायक मोहन अपने साथी के साथ घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराने में सहायता की। अपने 3 घायल साथियों पर मंडराते गंभीर खतरे को भांपते हुए अपने जीवन की परवाह किए बिना और जांग में गोली लगने के बावजूद उन्होंने एक आतंकवादी को पास जाकर मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। इस बीच उन्हें पेट में भी गोली लग गई। अपनी घायलावस्था में भी अडिग रहकर वे स्वयं अंतिम आतंकवादी पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त होने से पहले उसे भी बहुत ही नजदीक से मार गिराया। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से 2 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 अन्य आतंकवादियों को मार गिराने और अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता की और इस प्रकार उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की पत्नी श्रीमती भावना गोस्वामी। A touching moment as Lance Naik, Mohannath Goswami's wife Bhavna receives her husband's gallantry award. I am in the birds that sing. I am in And that is what is so special about this occasion. Cry. I am not there. I do not There is celebration, there is reverence, there is remembrance, and there is hope. When all come together, we have color, discipline, pageantry, and of course, deep remembrance here at Rajpath as India celebrates her 67th Republic Day. आज के दिन हर देशवासी इन दृश्यों को अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहता है। गणतंत्र का ये उत्सव हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। निगाहें आकाश की ओर, हेलीकॉप्टर की आवाज कानों में पड़ती हुई राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए विंग कमांडर आर.के. दुबे के नेतृत्व में यह फॉर्मेशन फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, दूसरे पर थल सेना, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना का ध्वज विंग कमांडर आर.के. दुबे के नेतृत्व में।